Good morning everyone. I am Kritika Paliwal and you are studying English with me. So your periodic tests are going to be start from 14th, right? And I hope you know the syllabus of English. The syllabus of English is in literature. Only one chapter will come, that is chapter number 8, Cats Sleep Anywhere. Okay, I had sent this syllabus already in the WhatsApp group, but one more time for you, I am writing it here. And from grammar, okay, from term 1 Pansy, okay, from Pansy number 1, जितने भी चैप्टर्स अभी हमारे हुए हैं, है ना, पैंसी नंबर 1 में सेकंड टर्म से जब हमने स्टार्ट किया था, राइट, आफ्टर हाफ ईयरली एग्जाम्स, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, ऑलराइट, देन द एडजेक्टिव्स, a and the, okay, and chapter is, am and are, okay, or am, is and are, okay. So these chapters will be coming in the periodic test, and today we are going to do the revision of all the chapters in short. Okay, I will tell you what kind of questions will come. And for your practice, I am sending you worksheets daily, and I hope that you are solving them. I hope that you are solving the worksheets, because only 2-3 children are there who send me the solved worksheets before I send them the solved worksheet. Okay, मैं worksheet दूंगी, उसके next day worksheet का solution worksheet भी दूंगी, ठीक है, वैसे मैं दे रही हूँ, राइट, बट बहुत कम बच्चे हैं जो मुझे सॉल्व करके भेज देते हैं उसी दिन वर्कशीट. तो प्लीज सॉल्व द वर्कशीट्स, इट इज फॉर योर प्रैक्टिस ओनली. इफ यू विल सॉल्व द वर्कशीट, you will there is a chance that you will score better in the periodic test. Okay, so this is your syllabus. Literature, chapter 8, Cats Sleep Anywhere. Grammar from Pansy number 1, first semester Pansy. Singular and plural nouns will come. The adjectives, a, am and the, is, am, are. So these chapters are going to come in your periodic test. Total 5 chapters are there. So let's start the revision of chapter number 8, Cats Sleep Anywhere. Okay, so poem we know very well, Cats Sleep Anywhere. The poem is about the cats. Okay, poem किसके बारे में है? Cats के बारे में है. और cats की क्या क्वालिटी बताई गई है उस पोएम में कि cats कहीं भी सो जाती, cats sleep anywhere. All right, there were so many places discussed in the poem where the cats sleep. Okay, so the places where cats sleep. Okay, I think we have written one answer about this, है ना. Write all the places where the cats sleep. उस आंसर को अच्छे से पढ़ लेना. Okay, from there you will get the summary of the poem. Like cats sleep anywhere, like any chair, any table, top of piano, window ledge, है ना. Then they sleep in a cardboard box, empty shoe, right. Then cupboard with your frocks, and then there are more places like that. So cats sleep in so many places, or I'll say cats sleep on so many places. So anybody's lap will work, right. So keep all those places in mind. And I think I have given you one worksheet on basis of chapter number 8, Cat Sleep Anywhere. मैंने आपको एक worksheet दिया था chapter 8 के basis पे. उस worksheet को थोड़ा सा देख लेते हैं. So window ledge is a dash under a window. अभी यहाँ पर आपको word meanings भी अच्छे से पढ़ने की जरूरत है. Window ledge is a dash under a window. So what? Window ledge is a window ledge is
a dash under a window, है ना. window ledge क्या, like in a question answer form it can come, sorry in fill in the blank form it can come, है ना, short answers. So window ledge is what? It is a shelf, SHELF, shelf. अभी आपको थोड़ा सा spellings पर focus करना पड़ेगा, right? So it's a shelf under a window. Then rhyming words were also there in the chapter 8. rhyming words भी हमने पढ़े थे. poem में भी हमने काफी सारे rhyming words underline किए थे. So rhyming words gives a singing effect to the poem. What do rhyming words gives? They give a singing effect to the poem. What effect? Rhyming words they give singing effect. Right. What effect comes with the rhyming words in the poem? Singing effect. एक song के जैसे लगने लगती है ना poem जब rhyming words होते हैं. Then the animal which can sleep anywhere is that is discussed in the poem. We are talking about that animal that is discussed in the poem that can sleep anywhere. तो कौन सा animal है जो कहीं भी सो जाता है poem में? Cats. Okay. So rhyming word also, rhyming word for ledge is edge. आपका question number 4 worksheet 1 का है ना. So ऐसे आपको rhyming words भी थोड़े से learn रखने, like care का anywhere rhymes with chair also, right? Then question number 2 was true or false. Eleanor Ferguson is the author of the poem. That is true, right? Eleanor Ferguson is the author of the poem. So this is true. I am talking about worksheet 1 that I have given to you. Alright, I have given one worksheet that is totally based upon this chapter 8. ठीक है, the first worksheet. So if you have that in your phone, otherwise just listen. ध्यान से सुनो सिर्फ. So Eleanor Ferguson is the author of the poem. We have to tell whether it is true or false. हमें बताना है true or false है नहीं. तो Eleanor Ferguson है author poem की तो true है, right? Cats sleep only in mother's lap. कैट सिर्फ मदर के लैप में ही सोती है, मम्मी की गोद में ही सोती है. नहीं ना, एनीबॉडीज लैप विल वर्क, किसी की भी लैप में वो सो जाती है. ठीक है. सो व्हेन अ सेंटेंस लाइक दिस कम्स, कैट स्लीप ओनली इन मदर्स लैप, दिस सेंटेंस इज फॉल्स. कैट्स कैन फिट देमसेल्व्स इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स. यस, कैट्स फिटेड इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स. रिमेंबर दैट लाइन. तो कैट्स कैन फिट देमसेल्व्स इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स. ओके, वो अपने आप को एक कार्डबोर्ड बॉक्स में पूरा फिट कर सकती हैं, छोटा सा कार्डबोर्ड बॉक्स में वहाँ आराम से सो सकती हैं. दिस सेंटेंस इज ट्रू. देन इन द पोएम, ओके, कैट्स स्लीप इन द गार्डन. अभी स्पेसिफिकली हम पोएम की बात कर रहे हैं. ऐसे तो कैट्स एक्चुअली गार्डन में सो सकती हैं, बट इन द पोएम गार्डन वाज नॉट मेंशन्ड, राइट? तो पोएम में कैट्स गार्डन में भी सोती है. इज इट राइट? नो, अकॉर्डिंग टू द पोएम वी आर टॉकिंग. ठीक है, that is why the sentence is false. That cats sleep in the garden. That's why the sentence is false. Now multiple choice questions. Choose the rhyming word for anywhere. अभी 3 options है बेटा. Anywhere का rhyming word आपको बताना है. 3 options: table, chair, piano. तो anywhere rhymes with chair. That's why it is the correct option. Solution भी दिया था मैंने इस worksheet का. ठीक है, I'm just explaining the worksheet to you. The meaning of the word empty is, जो वर्ड है empty, उसका मीनिंग क्या होता है? पोएम में आया था ये वर्ड. सो द मीनिंग ऑफ द वर्ड empty is half filled, fully filled, not filled. Okay, so the meaning of the word empty is not filled. Something which is empty is something which is not filled up. Okay, something which is not filled up, जो खाली है. Then choose the rhyming word for kind. Next question. Kind. We have to choose the rhyming word for kind. So knee, mind and row. Kind rhymes with mind. Okay. Then next question. Tick the places where cats do not sleep in the poem. Question को ध्यान से पढ़ना. Read the question very carefully. Okay. One question can come where you have to tick the places where cats sleep in the poem. Here the question is tick the places where cats do not sleep in the poem. So the options given to you are any bed, any chair, top of piano. Okay. So the option where cats do not sleep is any chair पर, किसी भी chair पे सो जाती हैं. Top of piano, yes. But any bed, bed is not discussed in the poem. So any bed is the correct option where the cats do not sleep. So this was the short revision for chapter number 8, the revision that I took on the basis of worksheet. Okay.
Now coming back to our grammar chapters. Okay. Singular and plural nouns. All right. So coming back to the grammar chapter, that is singular and plural nouns. Chapter is singular and plural nouns. ठीक. So worksheet number 2. Okay, here I have the worksheet with me. I hope you have solved it in your notebook or somewhere. Okay, solve करो. Worksheets are very important. Okay, बहुत मेहनत लगता है मुझे तुम लोगों के लिए स्पेशली वर्कशीट बनाने में, राइट? मेहनत लगता है इसलिए सॉल्व नहीं करो, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं इसलिए सॉल्व करो, ठीक है? So fill in the blanks, whatever. Let's first take some short introduction about the chapter. So children, singular and plural nouns, right? So you know what are singulars? Singular nouns are when all the nouns that stand for only one person, place, animal or thing. Okay, all the nouns that stand for only one person. Singular, one person, place, animal or thing. Plural, more than one. Right? More than one person, place, animal or thing means एक से ज्यादा जब नाउन होता है क्वांटिटी में तो उसको हम प्लूरल नाउन्स कहते हैं. सिंगुलर में सिर्फ एक ही नाउन के बारे में. नाउन्स में पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, एनीथिंग कैन कम, राइट? सो देन यू नो, अब देयर इज वन कंडीशन दैट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, ओनली काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट? The noun that are countable, they are only like they can only come in the singular and plural form. जिन noun को count कर सकते हैं सिर्फ वही singular और plural forms में होते हैं, right? So now let's take a look at the worksheet. Beta, remember all the rules. Now some 6-7 rules we had studied to form the plurals. Okay, practice all of them, right? And then remember the words which be the same in the plural form and the singular form. Okay, ये chapter जो है पूरा आपको पढ़ना है अच्छे से, है ना? All the words and some exception cases. So now let's come back to worksheet. Fill in the blanks. Question number 1. Dash nouns can be singular or plural. अब कौन से nouns हो सकते हैं singular और plural? Countable nouns. So the answer is countable. Then ऐसे अब देखो इस तरह से क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ओके, इन द एग्जाम आल्सो. आई एम टेलिंग यू द पैटर्न, राइट? आई एम टेलिंग यू द पैटर्न फ्रॉम द वर्कशीट. लाइक सिंगुलर BALLOON, प्लूरल dash. Okay, so this is the pattern. Singular balloon, that means balloon word जो है singular form में ये होता है. Plural is equal to dash means you have to tell कि plural form में क्या होगा. So balloons, BALLOONS. Okay, this is how you have to answer these type of questions. Don't get confused. Singular balloon, plural balloons, very easy. Similarly, the next question from worksheet number 2. Singular hair, plural also hair, है ना? hair, बाल. Singular वर्ड जो है वो भी हेयर ही होगा और प्लूरल वर्ड जो है वो भी हेयर होगा, हेयर्स नहीं होता है, राइट? देन डैश नाउन, फोर्थ क्वेश्चन. डैश नाउन्स स्टैंड फॉर मोर देन वन पर्सन. अब मोर देन वन पर्सन के लिए विच नाउन स्टैंड्स? प्लूरल, राइट? दिस प्लूरल वन. सो प्लूरल नाउन्स स्टैंड फॉर मोर देन वन पर्सन. हियर यू हैव टू फिल दैट गैप विथ प्लूरल, ठीक है? तो प्लूरल नाउन मोर देन वन पर्सन के लिए स्टैंड करते हैं, ठीक है? नाउ ट्रू और फॉल्स. सिंगुलर नाउन्स स्टैंड फॉर ओनली वन पर्सन. सिंगुलर नाउन्स स्टैंड फॉर ओनली वन पर्सन. सिंगुलर नाउन सिर्फ एक ही पर्सन के लिए स्टैंड करते, राइट? दैट इज ट्रू. सिंगुलर मीन्स वन, राइट? सो ट्रू.
क्वेश्चन नंबर 2, सम नाउन्स लाइक पैंट्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल. नाउ आई टोल्ड यू, ध्यान में रखना उन नाउन्स को जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सिजर्स, पैंट्स, जीन्स एक्सेट्रा, राइट. सो सम नाउन्स लाइक पैंट्स, पैंट्स वर्ड जो है ना उसके जैसे कुछ नाउन्स जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं. सो दैट इज ट्रू. देन क्वेश्चन नंबर 3, the plural noun for sheep is sheeps. Okay, the plural noun for sheep is sheeps. Okay, so this is wrong because the plural noun of sheep is always sheep. It doesn't get changed in the plural form. So sheep, sheep, right? Then the plural noun for army is armies. अच्छा, थर्ड का आंसर था false है ना. शीप का क्वेश्चन में दिया था शीप से, तो दैट इज रॉन्ग ना, सो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स. देन द प्लूरल नाउन फॉर आर्मी इज आर्मीज. आर्मी का प्लूरल नाउन ARMY एज आर्मीज इज रॉन्ग, राइट. ARMIES आर्मीज, तो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स, राइट. सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द प्लूरल वर्ड फॉर डोर. अभी डोर का प्लूरल डोर्स, DOORS. बहुत सारे ऑप्शंस है, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है, ध्यान से करना. डोर का प्लूरल होगा DOORS, डोर्स. क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द प्लूरल वर्ड फॉर मैन, है ना. रिमेंबर द रूल वेयर इंटरनल वॉवेल गेट चेंज्ड. मैन का प्लूरल हो जाएगा MEN men. सो MEN men विल बी द प्लूरल ऑफ MAN man. ओके, सो मैन इन सिंगुलर, men in plural. Choose the plural word for child. Child in singular, in plural, children. Okay, so the word children for plural, right? So child का plural हो जाएगा children. Then choose the singular word for babies. अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4, choose the singular word for thieves. अब क्वेश्चन थोड़े अलग भी दिए हैं, मैंने प्लूरल वर्ड दिया है और आपको सिंगुलर बताना है, ठीक है. हमें दोनों तरफ से पता होना चाहिए ना रास्ते, तो हमें प्लूरल वर्ड दिया गया है, हमें सिंगुलर बताना है. तो थीव्स, THIEVES, थीव्स. THIEVES, thieves. In singular it is THIEF, thief. Remember that rule? F के पहले अगर वोवेल है तो VES ऐड होता है, राइट. THIEF, thief. Okay, so thieves. So plural was given, you have to tell the singular. Similarly, babies, the singular will be baby, and for buses the singular will be bus. Okay, so this was short revision of chapter number whatever, singular and plural nouns. Then chapter 8 actually. Then the next question, the adjectives. Okay, next chapter is the adjectives. Chapter 9, the adjectives. Okay, chapter 9, the adjectives. So let me tell you one line that describes the adjectives is, adjectives are describing words. Okay, adjectives कौन से वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं, किसको डिस्क्राइब करते हैं, nouns. So adjectives are the words that describes the noun. Okay, so adjectives are describing words, very easy. So बस इतना ही. अब आपको सेंटेंस में पता होना चाहिए कि नाउन कौन सा है और उसको डिस्क्राइब कौन सा वर्ड कर रहा है ना. Then position of adjectives we have studied. Okay, position of adjectives. Two positions. I told you, right? One is before nouns and then one is after the verbs. So, before nouns and then after verbs. ठीक है? So, two positions. That's all you have to know about adjectives. Now, you should know that what is the adjective in a sentence. ठीक है, टू पोजिशन, बिफोर नाउन्स एंड आफ्टर वर्ब्स. अब कहीं अगर आ जाए बिफोर वर्ब तो वो सेंटेंस फॉल्स. कहीं अगर आ जाए एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड बिफोर डैश, तो इन दैट डैश यू हैव टू फिल अप
नाउन। ओके, ऐसे इसी तरह से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। सो वर्कशीट नंबर 3 वाज ऑन द बेसिस ऑफ एडजेक्टिव्स। जस्ट अ मोमेंट। Right. So now worksheet number 3, question number 1, fill in the blanks. N dash describes the quality of a noun. ठीक है, कौन सा वर्ड है या क्या है जो नाउन की क्वालिटी डिस्क्राइब करता है? It's the word adjectives. Okay, so an adjective describes the quality of a noun. That was your first question. Then an adjective is generally used before nouns. Fill in the blank, question number 2, worksheet number 3. An adjective is generally used before nouns. Adjective जो है वो generally nouns के पहले, before nouns, right? An adjective is generally used before nouns. So there noun you have to fill up. Then adjective in the sentence. He has a new book. Adjective in the sentence. He has a new book. What is adjective here? The word new is adjective here. Okay, so this you have to figure out. All right. Then again one sentence. Amit is a tall man. तो उसमें adjective क्या है? Tall. वो आपको बताना है. Right. Now state whether true or false. An adjective is sometimes used after the verb. एडजेक्टिव कभी कभी वर्ब के बाद में भी यूज होता है, दैट इज ट्रू, राइट? एडजेक्टिव्स आफ्टर द वर्ब्स, आफ्टर द वर्ब, सो दैट इज ट्रू। अनीता हैज कर्ली हेयर, अनीता के बाल कर्ली हैं, एडजेक्टिव इसमें है अनीता, सो दैट इज फॉल्स, राइट? द एडजेक्टिव इज कर्ली। नेक्स्ट इज द टी इज हॉट, एडजेक्टिव इज हॉट, नो, यस, ओके, द टी इज हॉट, सो व्हाट इज द एडजेक्टिव हियर? दैट इज डिस्क्राइबिंग टी हॉट. Okay, so that is true. Then the house is small, adjective small, that is true. Then multiple choice questions. Choose the adjective. The mango is ripe, so what is the adjective? Ripe. The man is old, what is the adjective? Old. The girl is beautiful, what is the adjective? Beautiful. The grapes were sour, अंगूर खट्टे हैं, क्या है adjective? खट्टे, sour, sour word is the adjective. The child is very happy, what is the adjective? Happy. Okay. So this was small revision on the basis of adjectives and the revision explanation of your worksheet number 3. Now come on to worksheet number 4 and or I say chapter number 10, A and the. A and the. Chapter 10, A and the. First let me tell you कि ये जो तीनों words है ना, ठीक है? Just a minute. So A and the. What are these? These are called as articles. ARTICLES. इन्हें क्या बोला जाता है ग्रामर की टर्म्स में? We call them articles. Okay. A and the are called as articles. And here A and N. ठीक है? A and N. They are used with singular nouns, right? So A and N are used with singular words. ठीक है? A और N किसके साथ यूज किए जाते हैं? सिंगुलर वर्ड्स के साथ. वही आर्टिकल द जो है some particular things, it is used with some okay particular things. When we are talking like about a particular thing, like about a particular pen, this pen. So this is the pen which I always used to write on the board. Okay, so some particular things, then with unique things. So article the is also used with the unique things. ठीक है? So this is the intro about A
ए एन एंड द, अभी इधर ए और एन में भी ए एंड एन, ए इज यूज्ड बिफोर द साउंड्स, विच साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स. Okay, A is used with the consonant sound words and N is used with the vowel sound words. Okay, N is used with the vowel sound words, right? N is used with the vowel sound words. A is used with the consonant sound words and N is used with the vowel sound words. Only this information you have to remember. Alright, and there was one very nice worksheet that I had given to you. So, A, an and the are articles, worksheet number 4. Okay, let's revise this worksheet. Fill in the blanks. A, an and the are articles, right? Fill karna us blank ko article se. Then, the article dash is used before the names of unique things. Which article is used with the names of unique things? Article the. Okay. I have dash orange in my bag. Options A or N है. I have dash orange. Orange. O. O is a vowel sound, so we will use an. I have an orange in my bag. There is dash bag on the table. So there is dash bag. Bag. This is a consonant sound, right? B. Bag. Consonant sound. So with consonant sounds we use the article A. Therefore there is a bag on the table. Then state whether true or false. We use article A before words beginning with vowel sound. ठीक है, हम यूज करते हैं आर्टिकल A उन वर्ड्स के पहले जो वॉवल साउंड से स्टार्ट होते हैं. नो, वी यूज आर्टिकल एन with the words beginning with the vowel sound. So this statement is false. Then we use the when we talk about particular thing. Yes, we use the article the when we talk about particular things. So this statement is true. Then A or an is used with singular words. Of course, A or an is used with singular words, right? So this statement is true. The letters A, E, I, O, U are consonants? No. The letters A, E, I, O, U are vowels. So जब क्वेश्चन में आए कि A, E, I, O, U consonant है तब आएगा false. Okay, just a minute. Then multiple choice question, children. The article used with consonant sound is A. The article used with consonant sound is A. She is dash intelligent girl. अब intelligent है तो कौन सा article आएगा वहाँ पर? An intelligent. Dash Ganga is a holy river. Now I told you कि with unique things, which article is used? Ganga. It is a unique river, right? It is the name of a unique river. So the Ganga is a holy river. He is dash honest man. Honest. Doesn't matter it starts with H. H-O-N-E-S-T. Honest. ये word start हो रहा है H से, लेकिन sound जो आ रहा है वो एक vowel का है. So honest, right? O. O is a vowel. So an honest. He is an honest man. ठीक? Then there is dash tree in my garden. There is a tree in my garden. So this was the revision for worksheet number 4. Now worksheet number 5. And the chapter is A, an and the. Sorry, the chapter is and are. The chapter is chapter 14, I guess. Is am ठीक है. अब इनके बारे में एक छोटा सा इंट्रो. वैसे तो अभी जस्ट ये चैप्टर फिनिश हुआ है तो आपको आता ही होगा, राइट? इतना रिवीजन की जरूरत नहीं है. Is, am and are helping verbs. Is used with singular subjects. Am is used when the subject is I. ठीक है? Is use करते हैं singular subjects के साथ. Am use करते हैं जब I हो subject में और are use करते हैं plural subject के साथ. ठीक है? अब आपको याद रखना है कि singular subject कौन कौन से हैं, plural subject कौन कौन से हैं. Am का तो टेंशन ही नहीं है. Am तो सिर्फ I के साथ यूज होता है. So अभी वर्कशीट देख लेते हैं. ठीक है? Dash is always used with the word I. With the word I, what is used? Am is used. Worksheet number 5. Fill in the blanks. Dash is always used with the word I. I word के साथ कौन सा word use होता है? Am. Then dash is used
विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स। वी, यू, दे आर प्लूरल सब्जेक्ट्स। ओके, वी, यू, दे, है ना, दे ऑल आर प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो वी, यू, दे आर डैश सब्जेक्ट्स। व्हाट सब्जेक्ट्स? प्लूरल सब्जेक्ट्स। देन शी इज प्रिटी। शी बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आता है ही, शी, इट, ठीक है। सो शी इज प्रिटी, दैट शी के साथ आएगा इज, है ना। सो शी इज प्रिटी। नाउ ट्रू और फॉल्स? Is, am and are used in the present tense. Yes, that's the most important thing you have to remember. Is, am and are helping verbs or the main verbs of which type of tense? They are used in present tense. वो time जो अभी चल रहा है, ठीक है। So is, am and are used in present tense. This sentence is absolutely true. He, she, it are plural subjects, right? So he, she, it are they plural subjects? No, they are singular subjects. Okay. Is, am and are used as main and helping verbs. बस एक चीज और याद रखना, is, am and are जो है वो दोनों verbs की तरह यूज होते हैं, main verbs भी और helping verbs भी। Okay, is, am and are adjectives? क्या is, am and are adjectives है? No, false. Is, am and are verbs. Okay. Now multiple choice question. There are only 5. It will take only 2 minutes. So the milk is pure, right? There are 4 insects. You are a boy. You के साथ are, है ना? Then I am 5 years old, and then I am a student. So this was the explanation of worksheet number 5. I know it was a little fast, but what to do? We have to cover all the worksheets in this video. After that, you are having your test. So prepare well for your test. All the very best. अच्छे से करना। Bye bye. Take care.